आज इस वीडियो में मैं क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल फी है उसको कैसे वेव ऑफ कर सकते हैं उसका मैं ट्रिक बताने वाला हूं। पर्सनली मैं दो बैंक पे ये ट्रिक ट्राई करने वाला हूं, SBI और अमेरिकन एक्सप्रेस। आप लोग चाहें तो किसी भी बैंक पे ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम में आप लोगों को रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाएगा। दोनों ही केस में मेरा काफी अच्छा सेविंग हो गया है, जो कि मैं आप लोग लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं जो भी कॉल में बात किया हूँ और जो भी कस्टमर केयर से बात हुआ है वो प्रूफ भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। पूरा प्रूफ के साथ बात होगा ताकि कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन ना रहे। तो मैं सारा कुछ प्रूफ इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग रिन्यूअल फी वेव ऑफ करवाना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो चालू करते हैं। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड जो मैं इस चैनल पर रिव्यू करता हूँ वो लाइफ टाइम फ्री ही रहता है, लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि कुछ आप लोगों को माइलस्टोन या आप लोग टारगेट अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को रिन्यूअल फी वेव ऑफ होगा। फॉर एग्जांपल SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस का मेंबरशिप रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड, जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड था और जो टारगेट था, माइलस्टोन था, वो मैं मीट नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे क्या हुआ, एनुअल चार्जेस कट गया मेरे क्रेडिट कार्ड से। तो मैं क्या किया, दोनों ही क्रेडिट कार्ड को कस्टमर केयर को मैं कॉल किया और बोला कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाना है, क्योंकि मेरा जो एनुअल फी है वो डिडक्ट हुआ है, तो मैं क्लोज करवाना चाहता हूँ। तो अमेरिकन एक्सप्रेस को सबसे पहले मैं कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों को 75% का आप लोगों को वेवर दे देता हूँ। जो भी आप लोगों का एनुअल फी कटा है उसका 75% मैं रिटर्न कर देता हूँ। 25% आप लोगों को सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 400 के करीब हो रहा था, 400 450 के करीब, जो कि मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा भी। तो मैं फ़ोन ले लेता हूँ हाथ में। तो यहाँ पे आप देखते हैं मैं अमेरिकन एक्सप्रेस का ऐप के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं मेरा मेंबरशिप फी था 1500 रुपीज़ प्लस GST कटा है 270 रुपीज़, जिसपे देख सकते हैं 75% का रिवर्सल हो गया, 1125 रुपीज़ का रिवर्सल हो गया और GST भी रिवर्सल हो गया। तो मुझे सिर्फ पेमेंट करना पड़ा है 443 रुपीज़, यानी कि जहाँ पे मुझे लगभग 1770 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा था, वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 440 रुपये पेमेंट करने से काम बन गया, यानी कि 75% मुझे डिस्काउंट मिल गया। ये मैं कस्टमर केयर से बात करके करवा लिया हूँ, जो कि मैं आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा भी। और दूसरा क्रेडिट कार्ड कौन सा है, मेरा SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे आप लोग देखते हैं 499 का मुझे एनुअल फी चार्ज किया गया है और वहाँ पे मुझे कुछ टैक्सेस वगैरह भी लगा है। इफेक्टिवली जो चार्जेस बन रहा था वो बन रहा था 588 रुपीज़। तो मैं सबसे पहले क्या किया, 588 रुपीज़ पेमेंट कर दिया। उसके बाद मैं क्या किया, क्लोजर रिक्वेस्ट डाल दिया ट्विटर के अंदर मैं कंप्लेन कर दिया कि मुझे जो चार्जेस लग रहा है इसके कारण मैं इसको कार्ड को क्लोज करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखते पहले चार्जेस कटा है, उसके बाद आप लोग देखते हैं ये चार्जेस रिटर्न आ गया है, क्रेडिट हो गया है। तो ये देखते हैं इस टाइप से मेरे पास क्रेडिट आ गया है। तो जो पेमेंट किया था 588 रुपीज़, वो आप लोगों को देखते हैं यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में, यानी कि नेगेटिव बैलेंस में आ गया है, क्योंकि मुझे सारा ही रिफंड मिल गया है। जब मैं ट्विटर पे बोला तो वहां से कॉल बैक आया, उसमें मैं बताया कि मुझे चार्जेस पेमेंट करना पड़ा है, इसलिए मैं अपना क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आप लोग को 100% ही आप लोगों को जो चार्जेस है वो रिफंड कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग कार्ड को क्लोज मत करवाइए। तो चलिए मैं दोनों का ही जो बातें हुआ है उसका मैं कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग को सुना देता हूँ। This call may be recorded for internal quality and training purposes. This includes any time the call is passed on to a third party or placed on hold. If you ask us to speak with a third party on the call, please advise such third party that the call may be recorded. How can I help you? You can say lost or stolen. I don't think I got that right. Let's try again. For lost or stolen card, press 1. For card services, press 2. For new card applications, press 3. To activate a card, press 4. Or, if you need help with something else, press 5. Okay, what card activity can I help with? You can say, hear your balance, recent transactions, rewards balance, PIN reminder, or I need help with something else. I need something with help. Okay, what else can I help you with? You can say, password reset, application status, dispute a charge, cancel card, or something else. Dispute with charge. Are you calling about your account? I don't think I got that right. Let's try again. Please enter your 4-digit numeric password. Please enter the 3-digit card security code found on the back of your card to the right of your card number. I'll wait a moment while we send the password. Got it. One moment while I look for a representative to assist you.
Please hold the line and we will answer your call as soon as someone becomes free. A very good morning. Welcome to American Express. My name is Harsh. How are you doing today, Mr. Singh? Yeah, Hello. Hi, Yeah. sir. How are you? I'm good. Good to know that, sir. Please tell me how can I help you? I want to close my credit card as I have charged with annual charges. So, what's the process? Okay, I can do one thing, sir. We have a team available. I'll transfer the call over to them. Before you make a decision to close the card, they will see what best can be done about these charges as well. Okay. Yeah, please stay on the line. Thank you so much for holding the line, sir. Yeah. Sir, we have Puru on call with us, one of the specialists from the concerned team, and she'll take over the call. Okay. Thank you. Hello. Yeah, Hi. Very good morning. How are you? I'm good. Great. Wherein, Mr. Singh, I have been apprised with the discussion you had with my colleague, and that is in regards to the annual charges on your membership rewards card. Am I Yeah. correct? Yeah. Although, first of all, I can see that you've just completed 1 year with American Express, okay, and you're holding the membership rewards card, alright, and membership rewards card is a spend-based waiver card, wherein you are supposed to maintain the spends of 1.5 lakh to get a full fee waiver, okay, and minimum 90,000 to get a 50% annual fee waiver. Also, this card has been issued to you under an offer period. Okay, why? Because it comes with a standard charge of rupees 4,500, but for you it's only 1,500. Just to inform you. Okay. Okay. Secondly, you have accumulated some 4,100 points also on the card, and this card comes with a feature that if in case you take 4 transactions of 1,500 and above, okay, in a calendar month, alright, you get 1,000 bonus points. Additionally, if you spend 20,000 or more in a calendar month, you get extra 1,000 points, which is a one-time enrollment benefit. And then you can redeem those points for the gold collection catalog, that is the key feature of the card, which is a set of 18 and 24,000 points. Okay, although I understand the card has not been utilized much. Okay, but yes, going forward, I would definitely recommend you, okay, to give it a try and utilize the card for your further usage to have the best returns out of the card. I mean, that's what I was just recommending you. Rest, if in case it's the annual fee by any chance, alright, which is bothering you, okay, we can definitely provide you a one-time exception. Alright, wherein we can reduce your charges to flat 75% so that maybe you can give it a try. That's how I can help you out. No, still I have to pay 25% now. Correct. So 25% would be approximately, just a moment. Yeah, that will be 375 plus GST. No, I don't want to pay that. Okay, and do you have anything lined up, any sort of expenditure coming up? That's a total of 30,000 rupees in 3 months, because that can help you with a full fee waiver. As I can see, the total spends on the card are only 19,000, which does not qualify for an upfront waiver on the card. So yes, this is, I mean, that's an offer which we can provide you. I can't assure you that I will make any expense in 3 months. Maybe or may not be I can make. Okay. So then you can go for the 75% waiver, and if you want to, you can redeem your points for the remaining payment. No, I don't want. Because see, any which ways you have your points on the card, right? There are points accumulated on the card, alright. So yes, if in case you want to, alright, you can go ahead and redeem your points for the remaining payment. No, if it is 100% waiver, then it's okay. Then otherwise, I need to close this card. Yeah, so that's what I said. 75% annual fee plus the remaining one you can redeem with your points. No. Okay, so you don't want to redeem the points also? No. Okay, but it's then in that case, I mean, this would be a better option. If you're not redeeming your points, what I'm trying to say, understand, just a second. 75% I'll reduce for you. The remaining 25% you can pay with your points, because the points has a value of 1,041 rupees.
That's what I was saying. Okay, do it. All right. So what I'll do, I'll reduce it to 75%. The remaining 25% you have to use your points for making the payment. I can guide you how you can do it. You can just log into your online account or the mobile application. Okay. Just go there. I will do it later, or I will make payment through app only. Okay, no problem at all. So I have just done the 75% reversal. Okay, and you can pay the remaining amount via points. Okay. Am I speaking to Mr. Krishna? Yeah. Mr. Krishna, you have raised the concern that you want to close your account. Yeah. Yeah, so may I know why as I can see over the social media posted that because of annual fee is deducted, that is the reason why you don't want to pay you don't want to continue with the card, right? Yeah. So if I waive off the charges, that will be subject to approval. I cannot commit for that. I'll just check with my system. And in that case, you will be you will be continue with the card, sir? Yeah. Okay, so please stay connected. I'm just checking with my system. Okay, if I'll get the offer, I'll update you. Please stay connected. Okay. Thank you, sir. Okay, I can see the offer that for the reversal of annual fees. Okay, I'm just raising the request to the respective team. Okay, that will be subject to approval. And before that, can you please help me with the employer name, sir, where you are working? You have mentioned in the document. Dekh Review YouTube channel. Okay. Please stay connected, sir. I'm just raising the request to waive off the annual fees. Okay. Okay, the request has been successfully raised to the respective team. Okay. Okay. Just a moment. Just allow me a moment, sir. I need a one step has to be followed. Please stay connected. Yeah. So in this scenario, what customer has to do, as per statement, you will be paying your amount, okay? And when you will be checking with the next statement, billing cycle, okay, statement, you will be able to see that the amount has been reflected, sir. You have received the message also. I request you to please check, okay? You will be updated by 25 whether the annual fees reversal request is approved or rejected. So most probably it will be approved, but right now I cannot give you the final commitment. Therefore, I'm requesting you to wait till 25th of September, sir. Hello. I have received my message. Yes, sir. I'm just sharing with over the Twitter also, so that you can also track the status, sir. So, is there anything else apart from this, sir, that I can help you? Okay, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। तो आप लोग देखते हैं इस टाइप से आप लोग किसी भी बैंक का कस्टमर केयर को कॉल करके आप लोग बात करके आप लोग अपना एनुअल फी वेव ऑफ करवा सकते हैं, या 75% 80% डिस्काउंट ले सकते हैं, कुछ भी हो जो भी होगा आप लोग बात करके फिक्स कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैं मैक्सिमम टाइम अपना जो भी क्रेडिट कार्ड हो उसका मैं एनुअल फी पेमेंट नहीं करता हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं क्या करता हूँ, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही लेता हूँ। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि मैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसमें मैं कस्टमर केयर को कॉल करके बात करके मैं मैक्सिमम टाइम अपना एनुअल फी वेव ऑफ करवा लेता हूं। तो इस ट्रिक को आप लोग भी अप्लाई करके अपने कस्टमर केयर से बात करके आप लोग भी मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड का आप लोग एनुअल फी वेव ऑफ करवा सकते हैं। कुछ केस में क्या हो सकता है कि आप लोग को बोले कि नहीं हम लोग तो एनुअल फी वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपको यदि कार्ड क्लोज करवाना है तो क्लोज करवा लीजिए। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे ठीक है मैं 24 घंटे के बाद आप लोग कॉल करता हूँ और कंफर्म करता हूँ। यदि आप लोग कार्ड क्लोज नहीं करवाना होगा तो आप लोग 24 घंटे के बाद कॉल मत कीजिएगा। तो जब बात होता है और बात 5 मिनट या 10 मिनट होने के बाद बोलता है कि नहीं हम लोग वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप लोग बोल सकते हैं कि मैं आपको कंफर्मेशन 24 या 48 घंटे के बाद मैं बताता हूं, अभी मत कार्ड क्लोज करिए, मैं दोबारा कॉल करता हूं 24 से 48 घंटे के बाद। उसका आदत आप लोग को लगता है कि नहीं कार्ड क्लोज नहीं करवाना है, चार्जेस के साथ ही रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, वरना आप लोग क्लोज करवा सकते हैं। क्लोजर ट्रिक मैक्सिमम केस में काम कर जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी टाइप का किसी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।